Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. The most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 11th of April. The first news is panel fixes fees for engineering and tech institution, something very important in terms of regulating the fee for this institution. Second, India-US to discuss bilateral ties at summit. The ongoing 2+2 summit would be pivotal both for India and United States. Third, West Bengal coast face most erosion. This is basically a statement that was given in the parliament. We'll see the detail about this as well. Second last, amendment rule for train to go ahead for clearance. We'll see the detail of this as well. And the last is an editorial, India's role in disordered world. So this is an editorial from Hindu that will give you a perspective about India's performance and India's role in all the multilateral forum. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our new app, this is 2.0, which will help you for a lot more other facilities, which will give you option to have a bookmark option, MCQs, daily practice of the questions, which you can find at one place, right? So this is a one-stop solution for all your requirement for the study materials. Now, starting with the first news, that is panel fixes fees for engineering tech institution. This particular news is important for General Studies paper 2, that is issues related to development and management of education and human resources. So in a measured decision to regulate the tuition fees of engineering and technical institution in India, जो AICTE है, that is All Indian Council for Technical Education, they have sent a revised fee structure including the proposal for a minimum fee limit and maximum fee limit, and they have sent this proposal to the Ministry of Education. Ministry of Education was earlier known as Ministry of Human Resource Development, जिसको MORD भी कहते थे. It has changed to Ministry of Education. Now this is very important at this juncture where tuition fees regulation was long pending. तो बहुत पुरानी डिमांड थी इसको लेकर के कि जो मैक्सिमम लिमिट है, जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो सेट की जाए. So section 10 of the AICTE says that the council may fix norms and guidelines for charging tuition fees and other fees. तो if it's being asked in examination कौन कौन से पावर के अंदर वो derive करती है, तो specifically you have to mention that section 10 of the AICTE Act. Now expert committee की क्या recommendations हैं in this regard regarding the fees. So recently the executive committee of AICTE has approved a report which was by the National Fee Commission chaired by the B.N. Sri Krishna. So this name is again important if you are preparing for many other competitive examination also. This name can be important. आपसे पूछा जा सकता है कि फी रेगुलेशन को लेकर के AICTE के रिसेंट में जो कमेटी बनी है उस कमेटी को चेयर किसने किया. So the name of the committee was National Fee Committee. In short form, you can also call it NFC, National Fee Committee, that was chaired by the B.N. Sri Krishna. So they have also forwarded the request to Ministry of Education. They would be further examining that how this proposal has to be implemented. जो recommendations आई हैं National Fee Committee की वो कैसे implement करनी है. Now the revision comes basically 7 years after the expert committee has recommended for the upper limit where institution can charge a tuition fee, but there would be no limit or basically अगर limit की बात करें there were no limit earlier और जो minimum fees थी until were not decided. So at this point of time it is very important to decide a minimum fees also and a maximum fees also, because education is something which should be affordable in nature amid the concern of the COVID-19, which we have seen that बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके livelihood options भी खतरे में हुई है, and even some people have lost their job as well. So at this point of time, regulation of fees in India would be helping a lot more other families also. Now the committee has proposed that in case of graduate, that is undergraduate engineering discipline के लिए जो annual minimum fee होगी that cannot be below 79,000 and the maximum would be 1.89 lakh. इससे ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो AICTE approved है वो इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकती है. Now in previous report which was submitted on April 2015, the committee has suggested a maximum fee for undergraduate engineering examination was fixed at 1.44. This was a maximum.
and up to 1.58 lakh. So this was the earlier recommendation. Now the revision has already been made. So the revised slabs need the ministry as well as the state government to give its nod for final implementation. It has duty for both the center and the state government to give it assent, right? So एजुकेशन पे दोनों गवर्नमेंट की अपनी रूल्स बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजन है. So in that regard, it is something which is very important. Petitions for fee regulation. This is something which was already filed. तो एक पिटिशन फाइल की गई थी जहाँ पे एब्सेंस ऑफ मिनिमम फी होने की वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो थे वो मैक्सिमम फी की तरफ ही हमेशा चार्ज करते थे, राइट? सो नाउ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ मिनिमम फी वुड गिव अ रिलीफ टू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. बेसिकली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे स्टेट्स हैं जिन्होंने impractical minimum fee रखी है, which is again creating a problem for day-to-day functioning for the student and the administration as well. Other news, India-US to discuss bilateral ties at summit. I have comprehensively covered two important news. So these are two separate news which was reported in the Hindu. तो मैंने दोनों news को club किया हुआ है to give a clear picture. No, instead of discussing these two, the number is only going to increase. तो मैंने दोनों को club किया ताकि आपको जो important points है वो एक ही जगह पे discuss हो जाए. So this news is important for General Studies paper 2, that is bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. The Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and the US President Joe Biden is expected to hold a virtual meeting before the 2+2 foreign defense ministerial meeting, which is scheduled to start from today onwards. Washington में हो रही है ये. And India and US will hold their fourth annual 2+2 defense and foreign ministry dialogue, something very important to establish a healthy relationship between India and United States. Now, meeting with basically जो meeting होनी है, this will include discussion on bilateral relationship, cooperation and Indo-Pacific region, which US has been vocal about, and even India called for Indo-Pacific region which is transparent in manner, and even it called for uniformity in the region. Now, issues और क्या क्या है concern regarding South Asia, which India and US is looking forward with. So both leaders from India and US will review the ongoing bilateral cooperation and the exchange of views on the recent development in South Asia, Indo-Pacific region and the global issues of mutual interest, and dramatic development in Pakistan, where the Prime Minister, you have seen that recently the vote of trust, the vote of confidence was not achieved by the Prime Minister of पाकिस्तान जो बेसिकली वहाँ पे है. तो उस चीज़ को देखते हुए भी काफ़ी कंसर्न है इंडिया के लिए, बिकॉज द स्टेबिलिटी इन आर नेबरिंग रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इमरान खान ने जिस तरह से अपना सत्ता छोड़ा है उसके बाद अभी चेंज हुई है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे इस समय स्टेबिलिटी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इवन द श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस एंड मैसिव प्रोटेस्ट इज अ कंसर्न फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट? नाउ, एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो कुछ ऐसे कोर एरियाज है जिनको आइडेंटिफाई की गई है जहाँ दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे. द फर्स्ट इज एंडिंग द कोविड-19 पेंडेमिक. वी हैव सीन दैट द XE वेरिएंट ऑफ द कोविड-19 हैज कम अप इन चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज. इवन सम केसेस वर रिपोर्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल. तो इसको कैसे एंड करना है? इंडिया में भी कुछ केसेस रिपोर्ट होने स्टार्ट हुए. वी डू नॉट नो वेदर दिस वुड सर्ज और नॉट. एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट हैज नॉट कम अप विद एनी क्लैरिफिकेशन. सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लाइमेट चेंज. अभी रिसेंट में COP26 की मीटिंग भी हुई थी और इंडिया ने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है PCC के अंदर, दैट इज पेरिस क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल इकोनॉमी इज अनदर एरिया ऑफ डिस्कशन. क्लाइमेट एंड पब्लिक हेल्थ, fortifying and building the supply chain, people to people ties between both countries, India and United States, upholding free, open, rule based international order and boosts security, democracy, prosperity in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific ये ऐसी टॉपिक है जहाँ पे आपसे डायरेक्ट मेंस पे सवाल पूछे जा सकते हैं. सो मेक श्योर यू हैव अ गुड पॉइंट विद दिस. नाउ, डेवलपिंग द इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेड टू अनाउंस ड्यूरिंग द 2+2 मीटिंग. तो जो मीटिंग होगी उसके जो आउटकम होंगे we'll also discuss that also, because this is a very significant meeting between India and United States. Now, Ukraine crisis is again pivotal for both the countries. So US President will continue to close consultation on the consequences of Russia's invasion to Ukraine, जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया एक्चुअल वोटिंग में, और रशिया ने और जिस तरह से रशिया को सैंक्शन लगाया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बट इंडिया हैज़ नेवर डायरेक्टली told that we are supporting or we are against it. India neutral है. Basically, India is
मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विद रशिया इटसेल्फ. बट अगर बात करें यूएस की, उन्होंने सैंक्शंस लगाया है, एंड इवन दिस दैट मोर हार्श सैंक्शन कैन बी देयर. So India has raised the issues of commodity price impact on the war that include the United Nations as well. So global crude oil के prices भी काफ़ी ज़्यादा impact हुए हैं, which has ultimately impacted the inflation in country like India as well. Now defense deal की अगर बात करें, कुछ बड़े deals होने हैं जो कि pipeline है, especially for navies. In India Navy it will help. 30 Predator armed drone आने हैं. 3 services in advanced stages are there, and this would be deployed with the permission of the Defense Acquisition Council in India. And major deal अगर बात करें तो इंडियन नेवी को इसमें बेनिफिट होनी है. 26 डेक फाइटर एयरक्राफ्ट भी आने हैं. एग्जिस्टिंग जो INS विक्रमादित्य है and the indigenous aircraft Vikrant, but scheduled to be commercialized in August. And a deal of 6 more PI marine patrol aircraft is also in progress between India and United States in terms of the defense deal. So these are some of the infograph that will give you an idea how the deals are going. So ये आप देख सकते हैं MQ9 Predator, Istar, PSKUI Position Drone and C-130J. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन डील्स हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के नेवीज के बीच में, और अगर ये इंडिया आती है तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी बूस्ट होंगी. Other news, Bengal coast face most erosion. This particular news is important for General Studies Paper 3. Conservation, environmental pollution, degradation, and EIA, that is environmental impact assessment. This question is again something important both for the prelims and mains examination. आपसे consequential based prelims में सवाल पूछे जा सकते हैं. So the Ministry of Earth Sciences has recently informed the Lok Sabha that जो इंडिया की कोस्ट लाइन है mainland, that is 6,907 किलोमीटर कोस्ट लाइन for Indian mainland, उसमें about 34% is going degree of erosions. इतने erosions देखे गए almost, and 26% is of an acceleration nature, and remaining 40% is stable. So this is what the Ministry of Earth Sciences has to quote. Those of you who have geography as an optional, मेक श्योर आप इस तरह के न्यूज़ को डिटेल में पढ़ें, बिकॉज आपसे वहाँ पे मेंस के पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं. Now monitoring the shoreline erosion, we have a dedicated body that is National Center for Coastal Research. चेन्नई में बेस्ड है. ये एक ऐसी ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करती है, एंड इवन इट मॉनिटर द shoreline erosion since 1990, and it use the remote sensing data and GIS mapline techniques, जहाँ पे वो पता कर पाती है कि कितने कोस्ट लाइन में इरोजन्स हो रही हैं. Now about 6908 kilometer of Indian coastline and the mainland had been analyzed from the year 1990 to 2018, and the data was already presented in the Lok Sabha. Now data on coastline erosions की अगर बात करें, जो actual government की तरफ से facts आई हैं, for West Bengal which is located in the east coast, यहाँ पे 534 long coastline है, जिसमें almost 60% जो है वो सफर्ड हुई है इरोजन से, विच इज़ अ डेंजरस लाइन. ऑलमोस्ट 323.07% के आसपास है, किलोमीटर के आसपास. नाउ फॉलोइंग केरला वेस्ट कोस्ट, इट हैज़ 592 किलोमीटर्स, जहाँ पे ऑलमोस्ट 46.4% कोस्ट लाइन ने इरोजन फेस किया. सो दिस परसेंटेज नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन रीड इट आउट, एंड इवन जिनके ज्योग्राफी ऑप्शन है उनको तो ये पता ही होना चाहिए, राइट. तमिलनाडु हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 991 किलोमीटर, इसमें ऑलमोस्ट 42.7% की कोस्ट लाइन को डैमेज हुई है, इरोजन्स हुई है. गुजरात हैज़ अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ 1945 एंड इट हैज़ इरोजन ऑफ अराउंड 27.06%. और यूनियन टेरिटरीज में बात करें पुडुचेरी की, इट हैज़ 41.66 लॉन्ग स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड इवन इट वाज समथिंग 56.2% यहाँ पे डैमेज हुई, विच इज़ 23.42% ऑफ द टोटल इरोजन्स. तो सबसे कम पुडुचेरी में है, और सबसे ज़्यादा जो इरोजन्स देखी गई हैं वो आप बता सकते हैं, इट्स क्लोज टू 46% एंड विद 60% इन बंगाल एंड केरला. 15th Finance Commission की कुछ recommendations in this regard. So the 15th Finance Commission has recommended creation of National Disaster Risk Management Fund, और स्टेट के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, जो कि मिटिगेट करेगी नेशनल और स्टेट लेवल के प्रॉब्लम्स को करने के लिए, राइट. And they would award the period for 2021 to 2026. The Commission has also made specific recommendations for mitigating measures to prevent erosions under the NDMF. जो resettlement है displaced people की would also affect the erosion by the NDRF. So we have to look into this, क्योंकि finances काफ़ी important होगी to help out with all the preventions program.
So these are the recommendation also. So if you're writing in mains paper, make sure your answer is supported by the recommendations of the 15th Finance Commissions. Now, amendment rule for train to go ahead clearances. This particular news is important for General Studies paper 2. That is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from a design and implementations. So recently, Indian Railway has amended the general rule, making it mandatory for the loco pilot to get clearances of the guard before starting the train, before the train actually start. तो यहाँ पे अब एक मैंडेटरी प्रोविजंस लाई गई है जहाँ पे लोको पायलट की परमिशन ड्राइवर के लिए मैंडेटरी होगी और ये लोको पायलट को परमिशन आगे से जो स्टेशन मास्टर है वो दिया करेंगे. So according to railway sources, the provision under the clause 4.35 starting on the train of Indian Railway जहाँ पे जेंडर रूल अमेंडमेंट लाई गई है, and this is something which is going to be notified in Indian Gazetted and very important in terms of regulation Indian traffic and to ensure कि सही तरीके से रेलवे की फंक्शनिंग हो रही है. Now the green signal is good to go. अगर किसी भी ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिलती है तो वो आगे स्टार्ट कर सकता है, बट द लोको पायलट विल शैल वेट फॉर द क्लियरेंसेज ऑफ द गार्ड हु विल बी इन टर्न रिलाइंग ऑन द स्टेशन मास्टर. तो फर्स्ट जो लोको पायलट है, loco pilot would be running a train. He's a basically driver of a train. He required a permission from the guard and guard has to ensure that he's getting the permission from the station master of the Indian Railway. तो ये पूरी hierarchy establish की गई है जहाँ पे पूरी ट्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाएगा. लोको पायलट shall now have to start should now start the train without the authority to proceed. See? So the loco pilot shall from now not start his train without the authority to proceed. मतलब अब बिना इसके परमिशन के, लोको पायलट के बिना परमिशन के वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट आई डिस्कस्ड हियर. द स्टेशन मास्टर आफ्टर इंश्योरिंग द एक्टिविटीज सच एज watering, lodging, unloading, cleaning, this all part has to be completed before a train leave from one place to another place. और फिर कई ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं जहाँ पे ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं. Now prohibited space for traveling की अगर बात की गई, according to Indian Railways, the roof of the compartment, footboard and other coupling attached to the coaches meant for passengers travel, और guard is empowered to seek assistance from the government, that is जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनसे वो मदद ले सकते हैं कि कोई भी ऐसे लोग फुटपोर्ट, कंपार्टमेंट या रूफ पे ना चढ़े. सो दिस इज अ प्रिवेंशन विच इज टेकन फॉर द कंज्यूम, बेसिकली पैसेंजर सेफ्टी के लिए ध्यान रखी गई है. ऑल दिस डिसीजन दैट इज बीइंग टेकन इज इन इंटरेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स, राइट. द motorman या guard जो है could seek assistance from the security personnel in removing the passenger from all the areas which is prohibited. Now बात करें इंडियन रेलवे की सेफ्टी के बारे में, तो अगर वैकेंसीज की सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ्टी कैटेगरीज में क्या क्या वैकेंसी, यू कैन सी दिस डेटा, दिस आर स्टिल द वैकेंट डेटा दैट गवर्नमेंट नीड टू एम्प्लॉय. और ट्रेन एक्सीडेंट की अगर बात करें, वी हैव सीन अ बिट डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑन द एक्सीडेंट, एंड इफ यू लुक इनटू द history, way back in 1960, you can see the number of train accident was comparatively higher, but due to technological advancement this number has drastically reduced and we are also looking forward with an option जहाँ पे इस तरह के और train accident को reduce किया जा सके. Now moving to the editorial part, India's role in a disordered world. This is an editorial which is written by Arun Maira. He is an author of Million book and he also has worked with many important institutions. This particular editorial is important for General Studies paper 2, that is bilateral, regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. So what I'm going to discuss under this editorial, basically इस editorial को simplify करूँगा मैं कुछ important subheads पे. The first is the big questions, undemocratic architecture, G7 की जो grouping है उसके बारे में बात करेंगे, inequalities that have only risen, social tension के बारे में एक briefing, and even the way forward that how India can move forward. So first looking into the background, अगर बात करें जो institutions हैं exist, जितने भी बड़े institutions हैं, multilateral forum जो exist करते हैं, उसकी global governance जो है वो fail हुई है in uniting the world. This can only be a direct question in mains examination. ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड टू यूनाइट द वर्ल्ड, कमेंट. ऐसे सवाल अक्सर यूपीएससी पूछती है, तो आप इस कंटेक्स्ट में जरूर इस आंसर को प्रिपेयर करेंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. Summit after summit has proposed the conclusive result to resolve the global climate crisis, but still conclusiveness is still not there. We are still facing a problem of climate crisis, और जो global climate change की problem है वो अभी भी exist करती है.
WTO ड्यूरिंग द नोवेल कोरोना वायरस ने कंसर्न रेज किया था, जहां पे उन्होंने कहा कि जो रिच और पुअर कंट्रीज हैं उनके बीच अभी भी एक इक्विटेबल रूल्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन, विच इज़ अ कंसर्न फॉर 21st सेंचुरी। और जिस तरह से यूक्रेन में वॉर हुई है, रशिया की तरफ से रशिया ने इन्वेड किया है, दैट हैज़ मेक द थिंग मोर वर्स एंड इवन द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द रशियाज डिसीजन। नाउ सबसे बड़ी सवाल जो इस एडिटोरियल में पूछी गई है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं जिन्होंने रशिया को सैंक्शंस भी किया है, दे सेड दैट दे वुड बी थ्रोइंग आउट G20, जो रशिया है उसको G20 से बाहर की जाएगी, जिन्होंने रशिया से कंट्री जिसने इन्वेड किया यूक्रेन को। तो क्या इस टाइम पे इस कंटेक्स्ट में कैसी चीज़ें आगे बढ़ने वाली है? बिकॉज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ये बोन ऑफ कंटेंशन होगी, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी चेयरिंग द G20 मीटिंग। जो चेयर होगी इस बार इंडिया के पास होगी, और इंडिया की एक हेल्दी रिलेशनशिप है रशिया के साथ, और इंडिया ने एब्सटेंट भी किया था वोटिंग में। बट एट सेम टाइम जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की मास इंक्लिनेशन ये है कि वो रशिया को हटाएं G20 से, तो इंडिया क्या डिसीजन लेगी, एक डायलेमा इंडिया के साथ एग्जिस्ट करेगी कि इंडिया किस ऑर्डर में स्टैंड करती है। नाउ अनडेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर की अगर बात करें, सो द जनरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस वाज एस्टैब्लिश्ड, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अलावा जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड आई थी यूएन नेशंस की। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज एक्चुअली इवॉल्व। नाउ द वर्ल्ड बैंक and the International Monetary Fund has provided to build up economies with all countries to eliminate poverty. But the big question is that really that institution has helped to come down the poverty level. And however, जो victors हैं they have remained, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो एक वर्ल्ड ऑर्डर या फिर जो पीस ऑर्डर क्रिएट करनी थी, क्या उसमें वह पूरी तरह से सक्सेस हो पाई है? बिकॉज वी हैव सीन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यूनाइटेड नेशंस की रोल उतनी ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं रही थी जितनी एक्सपेक्टेड थी, राइट? सो यूएन असेंबली मीट्स आफ्टर एवरी ईयर, और अभी इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 193 हैं। नाउ इट हैज़ पासेस अ रेजोल्यूशन ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर्स, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हंगर, पॉवर्टी, वुमेन्स राइट, टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इसमें और कंक्लूसिव एक्शन की जरूरत है। बिकॉज जितनी मेंबर कंट्रीज हैं दे शुड कम विद सम कंक्लूसिव एक्शन एंड प्लान विच इज सस्टेनेबल इन नेचर and actually helping these vulnerable categories of people. Now, G7 grouping की journey को अगर देखें, it has actually started with United States, United Kingdom, France, Japan, West Germany and even Canada. तो ये 1976 में establish की गई थी नॉन कम्युनिस्ट पावर को हराने के लिए, and even European Union was invited to attend this in 1997. This is a historical background which I am giving a briefing. रशिया ने बाद में 1998 में ज्वाइन किया, which has given a signal that the cooperation is essential between East and West after the collapse of Soviet Union in 1991, right? However, Russia was thrown out of G7 2014 में इसको हटा दिया गया because क्रीमिया को जिस तरह से इन्वेड किया रशिया ने, उसके बाद they finally decided that Russia will not be the part of G7. Now, China has never been a member. This is again an important point that you must note. Now, inequalities की अगर बात करें, that have only risen attention. So inequality has increased within the countries among the other members too. जो democratic countries है such as US, they have demanded an increasing and more social and useless, basically unbound जो capitalism है उसके बारे में. Now strong leader who put in interest with the countries, कुछ ऐसे countries हैं जिन्होंने अपने nation के interest को pivotal रखने की कोशिश की है. That include Turkey, Hungary, Poland, Russia and even India. Now social tension, how this social tension is there in the global order. So the rule of governance and capitalist of the democratic institution has always been in tension with regards to the societies. अगर capital institutions की बात करें, इनकी जो कोशिश होती है कि वो democratic regulations जो हैं उसको easier बनाए business करने के लिए. So democracy should not be a hindrance in terms of doing the business. But जो democratic institutions हैं उनका ये कहना है कि capitals जो हैं या जो capitalism है वो इस तरह से भी ना करे कि सिर्फ अपने वो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को देखे, और जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं उसमें भी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो. सो दिस इज अगेन अ टेंशन दैट इज एक्सकेलेटिंग बिटवीन कैपिटल इंस्टीट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड. वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जितनी भी जिस तरह से वायलेंस हुई है पूरे वर्ल्ड में, इवन फॉर द पास्ट 50 years, दिस मस्ट स्टॉप. जिस तरह से इस बार रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, विच वॉज नॉट एक्चुअली एंटिसिपेटेड इवन
For a lot many time Russia has said कि हम military deal कर रहे हैं, we are not going to invade Ukraine, we are not going to invade Ukraine, but they actually did. This is something which is creating a mistrust and this should be stopped immediately, right? And to prevent the violence, it is essential कि जो global governance है वो genuinely democratic बने, हर एक countries के साथ खड़ा हो, and country must not attack each other. This is very bad because जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई आज यूक्रेन में उसको इस्टेब्लिश करने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे यूक्रेन को. इवन इट कैन बी मोर नंबर दैट, बट अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आम लोगों की नुकसान होती है. But it must give the freedom to evolve their own democracy. Economics should not be dictated by the others. जो hypocrisy है with undemocratic global dictators using the financial power and impose sanction to bring down their opponent, and it must stop immediately, right? So the first and foremost thing is to come up with a global order where countries should prevent this type of basically जो attacks है, और जो global order है, democratic institutions है, जो democratic setup के core essence है वो प्रमोट करने की जरूरत है. So this is how the way forward can be concluded. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answer of yesterday question. For first question, the correct option is A. For second question, the correct option is C. Today's MCQ for practice आपको बताना है Making Peace with Nature has been recently published by which among the following organization? United Nations Environment Program, Intergovernmental Panel on Climate Change, Food and Agriculture Organization, World Wildlife Fund for Nature. So if you know the correct answer, it is well and good. If not, you can check for the correct answer. Second, vertical launch short range surface to air missile. It is indigenously developed by DRDO and it is capable of neutralizing various aerial threat, including the sea skimming target. So if you know the correct answer, it's very good. If not, you have to search, you have to check for the correct options, because these type of question is again going to be help you in the prelims examination. So this was all about for the daily news and editorial analysis, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.